So today I'm going to discuss the crystal structure of NaCl, okay, and diamond. So NaCl crystal structure. Okay. So if you see the crystal structure of NaCl, okay, it is basically two interpenetrating FCC crystals. Okay. So okay. So if I draw the crystal structure, okay. So this is my crystal structure. Yeah, I'm not good in drawing. Okay, so you can draw. I'll just show you. So in NaCl structure, at the corner we have chloride ions. Okay, at the corner we have chloride ions, and at the edges between these two chloride ions, we have this your Na plus ions. So chloride ions are negative ions, so they have bigger size. So at the corner we have chlorine ions. Okay. So we have 8 corners. With these 8 corners, we have this, and along with this, we have also at faces. Okay, at the faces also we have chloride ions. So we have 6 faces, and we have 6 chloride ions on the faces. Okay, now we have total 12 edges: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, and each each edge we have this, we have your sodium. Okay, I'm showing dark circle. This is my sodium. Okay, here also I have a sodium. Okay, this is my this one. Okay, bigger one is chlorine, and I have this sodium atom. Okay, this is here. Similarly, here also I have sodium atoms. So this is, I can connect this one. Okay, this is sodium atom, and here I have one more sodium atom. These are all our small one are sodium atoms. Okay, and at the center also, okay, we have one small this sodium ions. Okay, now we have this 6 phases. Okay, so we have 2 more phases here, this one, and the center of this phase is this one. So this is your chloride ions. Okay, now this is also edges. Yeah, here we have this one. Here also we have. Okay, here also I have. So कितने sodium हो गए? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 हो गए ना? Okay, so and at the corner and the face we have this chloride ions. Okay, so these are chloride ions, and this is your sodium ion. So if I want to write the coordinates, okay, so coordinates of Cl ions, okay, coordinate of chloride ions are, because they are in corner, so you can write 0, 0, 0. Okay, then we have half, 0, half. Okay, and then also we can write half, half, 0, and 0, half, half, because they are at faces. फेस पे भी है और कॉर्नर पे भी है, तो कॉर्नर वाले को तो मैंने 0, 0 ले लिया, और फेस वालों के लिए मैंने ये हाफ वाला यूज कर लिया. ठीक है, हाफ हाफ 0 हाफ. ओके, तो 6 फेजेस 3 एटम्स का, क्योंकि हर फेज जो है आधा एटम कंट्रीब्यूट करता है. So I'm writing this total 4 coordinates of Cl ions. Similarly, coordinates for sodium ion.
Okay, so sodium ion is at the center. Okay, so I can write the coordinate is half, half, half. Okay, and then they are at edges. So I can write the coordinates are half, 0, 0, 0, half, 0, and 0, 0, half. Okay. So in any crystal, we have total n atoms per unit cell. Okay, the n effective. Okay, n effective, or the number of atom inside the cube in sodium is NaCl crystal is 8. Okay, how? So we have 8 corner atoms. Okay, so if I count Cl ions, so we have 8 at the corner. So each will contribute 1 by 8. Okay, and then we have faces. So we have 6 faces, and each will contribute half. So total number of Cl ions become 1 plus 3. So we have total 4 Cl ions. Okay, similarly if I calculate sodium ions, okay, so one is inside. Okay, and we have total 12 edges, and edge will contribute 1 by 4. So we have 1 by 4 into 12. So this is also again 1 plus 3, 4. So unit cell of NaCl structure, we have total 8 ions. Okay. Now calculate the packing fraction. Now we need to calculate the packing fraction. Okay. प्लीज डायग्राम से मत इरेज करना. हाँ ठीक है. तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ड्रॉ करवा लेते हैं, NaCl स्ट्रक्चर का ड्रॉ कर लो, डायमंड का ड्रॉ करके दे दो. इंटरव्यू में से इतना सिंपल चीज पूछ लेते हैं कभी कभी. Okay, so let me now. हाँ सर एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 कैसे हुआ, एक बार बता दीजिए. अब वो तो 3 डायमेंशनल देखना पड़ेगा ना, कैसे भी. एक क्यूब यहाँ पर है, एक क्यूब यहाँ पर होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा. इस तरह से होता है 1/4. ओके, 3 डायमेंशनल क्यूब्स. ओके, सो सपोज ये क्यूब है हमारा ना, तो इसके ऊपर सपोज एक क्यूब रख दूंगा, तो ये ऊपर का नीचे को जाएगा, फिर साइड में भी रहता होगा ऊपर से. ठीक है, तो देखना पड़ेगा. तो 3 डायमेंशनल इमेज करना पड़ेगा. आप कुछ 3 डायमेंशनल बॉक्सेस रख के देखो, माचिस रख के देखो एक बार. ओके, सो दैट विल कम एट 1/4. सो मेरे हिसाब से तो ये इस तरह से आएगा, 1 2 इधर से इससे. यस, ये तो करके देखना पड़ेगा. 1/4 एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 आता है. ओके सर. ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस वन. ओके, इसको इरेज कर दूं ना. So now let me calculate the packing fraction. Okay, so packing fraction क्या होता है? Okay, I want to create atomic packing fraction. So atomic packing fraction is basically number of effective atoms. So we have four atoms and the volume of atoms. So 3 pi r. Say this is Cl ions, radius of Cl ion. Okay, plus I can write 4 into 4/3 pi r सोडियम का रेडियस, सोडियम आयन का रेडियस क्यूब. ओके, एंड ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, ए क्यूब. नाउ इन क्लोज पैकिंग these all are connected. Okay, so if these are all are connected, so what I can write? R equal to, okay, I can write A equal to what? अगर ये connected है, so ये हो गया R. Okay, then small r, 2r. So I can write 2A equals to 2r Cl minus plus r sodium. Can I write like this? If these atoms are connected, okay, ये आपका सोडियम है, and इसके बीच में ये आपका this is है, and this is here. So this total length is A. Okay, this Cl minus. Okay, and this distance, so this is R chlorine. Okay, and between there are 2r. Okay, 2r sodium. So we have, and this whole distance is A.
So I can write A equal to 2 RCl plus Rn plus 1. Okay. Now just put these values here. So I can write now. इसको ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now I can write that atomic packing fraction equal to 4 into 4 by 3 pi common ले लो. This will be RCl cube. Okay. Plus your R Na plus cube. Okay. And this A cube will be what? 8 RCl minus plus R Na plus cube. So this will give you, this is 16, so it will give you 2. So 2 by 3 pi RCl minus cube plus R Na plus cube. Okay. And RCl minus plus R Na plus cube. So this is your atomic packing fraction for your NaCl crystal. Now it all depends what are the radius of chlorine and sodium. Okay, so generally the values, okay, mentioned in the books. I consult some books and I search on the internet also. So the values are somewhat differently mentioned. Okay, for sodium they are taking, sodium ion they are taking 0.9 angstrom. Okay, and for chlorine chlorine ion radius they are taking 1.8 angstrom. Okay, so sodium जो एटम है उससे इसकी कम रेडियस कम होगी. जैसे सिमिलरली जो क्लोरीन आयन है उसकी रेडियस उसके क्लोरीन एटम से ज्यादा होगी. तो वो एक्चुअली चेक करना पड़ेगा. इफ आई यूज दिस वैल्यूज, okay, if I use this value here in this expression, okay, so the my atomic packing fraction is coming, atomic packing fraction is coming around 66%. Okay. आप इसे put करके दे सकते हो value. If you put this one, so this should give around, okay, because the lattice constant of your NaCl is something 5.8 or 5.7 something. So if you add together and multiply by 2, that will be around 5.5 point something. Okay, this value is giving you a 66%. Okay, and I got some values from some literature also. So if I use those values, okay, R equal to 1 point, sorry, if I use R sodium, okay, 1.16 angstrom, and RCl, okay, 1.67 angstrom. Okay, so this will give you around 57.4%. 57.4%. Okay, so depend करता है वो तो एग्जाम में क्वेश्चन दे ही रखा ना, रेडियस बताया ही होगा. ओके, क्योंकि बिना रेडियस बताया तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं. अगर ये वाला डेटा लेंगे तो ये 57 आएगा, ये वाला डेटा लेंगे तो 66% आएगा. दिस इज योर NaCl crystal structure. ओके, एरेज कर दो उसको मैं. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now similarly for diamond तो बहुत सारी बुक में दे रखा है, आपको ने करके भेजा नहीं मुझे. डायमंड तो बुक्स में दे रखा है. सो डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, okay, so if we see the diamond crystal structure, okay, so in diamond we have n effective is 8, number of atoms we have 8. Okay, so say this is my diamond, okay, unit cell. Okay, तो डायमंड यूनिट सेल में क्या करना है कि एक तो आपको FCC है, ये भी FCC स्ट्रक्चर है. ओके, तो इसमें एक तो आपको कॉर्नर पे एटम रखना ही है, कार्बन एटम्स. डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन्स. ओके,
carbon atoms. Okay, and then you have atoms on the faces also. Okay, ये वाला क्यूब का सेंटर ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा कुछ. ओके, थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे आना चाहिए. चलो ये दो यहाँ एक हो जाएगा, और ये वाला फेस का सेंटर कुछ यहाँ कुछ आ जाएगा. ओके, नाउ इसके अंदर 4 और एटम भी होते हैं. ओके, यू हैव 8 एटम्स. ओके, नाउ यू हैव 4 more atom inside this unit cell. Okay, so you have to check the body diagonal. तो जैसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर. ओके, ये इसका क्या बॉडी डायगोनल है, ये वाला. ओके, सो इस बॉडी डायगोनल से क्या करना है आपको, मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ. इससे बॉडी डायगोनल से यहाँ तक. ओके, इसका 1/4 लेना है, 1/4 डिस्टेंस. ओके, सो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? √3 बॉडी डायगोनल क्या होता है आपका? होता है √3a. ओके, बिकॉज ये आपका ये आपका √2a आ जाएगा, फिर √2a का 2a² प्लस 3a², तो √3a आ जाएगा. तो इसका आपको लेना है a/4. ओके, सो a/4 डिस्टेंस पे आपको एक एटम रख देना है, कार्बन. ओके, ठीक है. नाउ इस एटम को क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट विथ एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कनेक्ट करना है. ये तो कनेक्टर है, एक आप उसको फेस से कर दो, एक इससे कर दो 3, और एक जो नियरेस्ट आपका जो एटम है इससे कनेक्ट कर दो. ओके, सेंटर एटम है, इससे कनेक्ट कर दो फेस से. नाउ यू हैव टू चूज द कॉर्नर. ओके, डायगोनल नहीं होनी चाहिए. ओके, ये छोड़ दिया, देन यू कम बॉडी डायगोनल नहीं होना चाहिए, देन कम टू हियर. ओके, नाउ दिस एंड ये इसका बॉडी डायगोनल कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका इधर. ओके, नहीं ये जाएगा इधर. ओके, ये जाएगा इधर. ओके, सो नाउ यू टेक अगेन this distance. Okay, you take one more atom. Okay, at 1/4 of body diagonal. Okay, and you connect this atom. Okay, the nearest face atoms. एक तो ये हो गया 2. Okay, and then you can connect this one. Okay, similarly now you have used this one, so leave this one. Okay, now come to here. Okay, now ये वाला कहाँ से जाएगा? ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा. Okay, यहाँ से जाओ, and then you connect one more atom here. Okay, connect to this face atoms. Okay, and connect with this one, so this become your one more. Okay, now leave this one, come here. तो ये क्या, ये इसके बीच में. So here you take one more atom. Okay, and this atom will be connected by this nearest face atom 3, and one more atom, center atom here, this one. Okay, तो बॉडी डायगोनल के 1/4 पे आपको ड्रॉ करना है. तो दिस इज योर डायमंड क्रिस्टल. आप बुक में देख लेना, थोड़ा ज्योमेट्री मेरा इतना अच्छा नहीं है. ओके, सो दिस इज योर डायमंड क्रिस्टल. ओके, नाउ इस क्रिस्टल में क्या होता है, these two atoms. Okay, these two atoms are touching to each other. Okay, these two atoms are touching to each other. बाकी एटम आपस में टच नहीं करेंगे. जो हमने ये a/4 पे रखा है, these atoms are touching to each other. ये वाला इससे, ये इससे, and this is इससे. Okay, and this distance is 1/4 of body diagonal. Okay, and this is equal to 2r. So I can write 2r equal to body diagonal 1/4 of body diagonal, 1/4 of body diagonal. Okay, this will give me r equal to, okay, 1/8 √3a. This is the relation between r and a. Now again is the face centered FCC, and four atoms are inside. Okay, so the n effective for this configuration is 8. Okay, so now you can calculate the atomic fraction. Okay, APF. So APF कितना आएगा? So APF will come, okay, 8 atoms into 4/3 pi r cube
okay, and then we have a cube. So if I use the relation R and A, okay, so this APF will give me 8 into 4 by 3, okay, R cube, and R is sorry A, okay, R को change कर देते हैं. R is equal to R को रहने दो, R A को change कर देता हूँ. So R A will be what? 8R by root 3, okay, का cube. Now solve this one. बताओ कितना आ रहा है? ऊपर पाई भी आएगा ना? हैं? ऊपर पाई भी आएगा? 5 क्यों? सर फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर आपने पाई मिस कर दिया है ना? पाई हाँ पाई मिस कर दिया. पाई ओके सॉरी पाई मिस कर दिया. थैंक यू. ओके सो नाउ उसको खोल दो. 8 4 by 3 पाई R cube. Okay, this will be 8 into 8 into 8 R cube. Okay, this will come through 3 root 3. Okay, so if you solve this one, this should give me 8 से 8 cancel हो गया. Okay, 3 से 3 cancel हो गया. This cancel हो गया. ये आ गया 2 R cube cancel हो गया. So pi root 3 16 कितना आ रहा है बताओ? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 0.34. 0.34. Okay, this is 0.34. Okay, so the for diamond APF is 34%. सर ये n इक्वल टू 8 कैसे है? भी 4 भी FCC है ना, so Yes, sir. 8 तो 8 कैसे आएगा? भी n तो n इफेक्टिव कितना आएगा? कॉर्नर एटम्स 1/8, फेस एटम 6 1/2 एंड चार एटम अंदर है ही इसके यूनिट सेल के अंदर है ही. 4 एक्स्ट्रा एटम अंदर है ये. This become 8. Okay. Now let me discuss one problem. Now again we will come back to the missing reflections. Okay. So shall I erase this one? Okay. Yes. So I'm erasing this one. Okay. Don't. So let me discuss one problem. Okay. Okay. The question asking at what angles an X-ray beam with, so we have given X-ray beam of wavelength 1.1 angstrom. Okay, and it falls on 210 family of NaCl planes. Okay, 210 plane दे रखा है. Okay, it falls in 2101 family of planes of NaCl crystal. Okay, NaCl crystal इसलिए दे रखा है कि ये बोलना चाह रहा है कि FCC crystal है. ये मान लो FCC crystal है. Okay, NaCl planes and diffracted beam is to exist. Okay, so ये बोल रहा है कि ये वेवलेंथ फॉल करेगी इस प्लेन पर और हमको चाहिए कि डिफ्रैक्ट बीम मिलनी चाहिए. ओके, सो तो किस एंगल से हम इस पे लाइट फॉल करें कि हमको डिफ्रैक्टेड बीम मिले. ओके, एंड द लैटिस पैरामीटर ऑफ NaCl इज गिवन 5.63 एंगस्ट्रॉम. तो ये बोल रहा है कि दिस वेवलेंथ वी आर फॉलोइंग ऑन दिस प्लेन. नाउ आई नीड दैट डिफ्रैक्टेड बीम शुड एग्जिस्ट. ओके, डिफ्रैक्टेड बीम 0 नहीं होनी चाहिए. तो किस एंगल पे मैं इसको इंसिडेंट करूं? क्वेश्चन क्लियर है? सर क्वेश्चन एक बार बताओ. सर एक बार और रिपीट कर दो. भी क्वेश्चन ही कर रहा है कि ये एक्सरेज है इस वेवलेंथ की, दे आर फॉलिंग ऑन दिस प्लेन. ओके, नाउ आई वांट आफ्टर when this light fall, this x-rays falls on plane, I should get diffracted beams. So in order to get diffracted beams, at which angle
I should these x-rays should fall on this plane. आपको एंगल निकालने हैं, तो ये FCC है, तो ऐसा ऐसा क्यों बोला कि डिफरेंट बीम एग्जिस्ट करनी चाहिए? ऐसा क्यों बोला है? सारे प्लेन्स के लिए एग्जिट नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी इसमें क्या है, इसमें ये मिक्स्ड है ना। फॉर FCC क्या कंडीशन है? इवन Mixed होना चाहिए और plane. mixed For FCC, zero. HKL, okay, should be unmixed. Either all or odd हाँ or हाँ, even. इधर ऑड होनी चाहिए और इवन होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मिक्स है, इसका मतलब ये तो इंटेंसिटी 0 देगा ना, ये तो डिफ्रैक्टिव बीम देगा ही नहीं आपको, तो फिर क्या करें? तो फिर ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछ रहा है? ओके, पर 210 नहीं देगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। पर अगर मैं इसकी जगह पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? 420, ये प्लेन तो देगा ना। और इसी को अगर मैं 3 से करूं तो हो जाएगा 6 6 3 0। ये तो फिर अगर ये फिर मिक्स हो गया, ये भी नहीं देगा। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8, 4 से करूं तो 840। तो ये वाला रिफ्लेक्शन, ये वाला तो रिफ्लेक्शन देगा ना, ये वाला रिफ्लेक्शन देगा, ये वाला भी रिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब 210 का n = 1 फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका सेकंड और फोर्थ ऑर्डर तो मिल सकता है ना। ओके, सो ये दो ही पूछ रहा है, दो एंगल पूछ रहा है। ओके, एट व्हाट एंगल एक्सरे बीइंग विथ लैम्बडा इक्वल्स टू फॉल इन दिस फैमिली ऑफ NAC plane if a different beam to exist, the lattice parameter of NaCl is given this one. Okay, so now you calculate, okay, you apply Bragg's law. Yes सर एट टू यहाँ प्लेन उन्होंने फिक्स दिया ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके कैसे चलेगा? मतलब उस प्लेन पे पूछ रहे हैं ना। भी इस प्लेन ऑफ इस फैमिली ऑफ प्लेन पे इंसिडेंट कर रहा है ना, तो ये सब प्लेन तो इन सब प्लेन के पैरेलल तो होते हैं। आपको ये 210 प्लेन है, 10 प्लेन है, 4420 प्लेन है, ये सब इसके मल्टीपल तो होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन इनका सेकंड ऑर्डर, लेकिन इसका जो सेकंड ऑर्डर है और फोर्थ ऑर्डर तो मिलेगा ना। ओके ओके, सो नाउ 2d sin theta equals to n lambda. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, ओके, और n = 2 मिलेगा और n = 4 मिलेगा। Now you can apply for FCC. Okay, so you can put the values here. So 2d is what? A h square plus k square plus l square. Okay, sin theta equals to, first case 2 lambda. Lambda is given 1.1 angstrom. Okay, so if you solve this one, okay, तो solve करके दोनों एंगल बताओ। So sin theta is what? Sin theta in first case for n = 2, sin theta n = 2, second order will be what? 2 into 1.1 into 10⁻⁻10 meter. Okay, and then we have here 2, A angstrom is 5.6 into 10⁻⁻10, and h square plus k square plus l square. Okay, so 210 क्या हो जाएगा? 2 to 4 415 √5। ओके, सेकंड ऑर्डर ले लिया मैंने, तो उसको तो वो HKL वही लूंगा मैं, 2 3 4 5 के √5 एंड sin थीटा। ओके, फॉर n = 4 यू कैन राइट सेम थिंग, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 into 1.1 10⁻⁻10 √5। ओके, 2 into 5.63 10⁻⁻10, ये कैंसिल हो गया, पावर तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बचा। तो बताओ एंगल कितना आ रहा है? सर फर्स्ट का 6 डिग्री। मेरे पास जो एंगल है ये है 25.9 और एक है 60.7। यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है, चेक कर लेना, नहीं हो तो बताना कल। ओके,
Okay. Similarly, okay, if I calculate, I told you that we have three important planes जिनकी atomic density बहुत ज़्यादा होती है. We have three planes. Okay, one is, say, for super, we have a simple cubic. Okay, we have D100. Okay, 1D110, and we have D111. Okay, if we calculate the ratio of these planes, it will come out one upon the interplane distance का रेशियो निकालेंगे इन प्लेन्स के लिए. ओके, then it is order of 1 is to root 2 is to root 3. For if FCC, this ratio 110 D111. okay, this FCC के लिए रेशियो क्या होता है? 1. okay, and then root 2, and this is half. This is half of this one. Okay, and for BCC, this ratio D110 D111, okay, is root 2 upon 2 and root 3. So this ratio you need to remember for these three planes. Okay, now based on this I'm giving you a question, that is your homework. You tell me answer. Okay, so Bragg found that for these three planes 100 110 110, okay, of KCl crystals, okay, of KCl crystals, तो KCl crystal दे रखा है और ये तीन प्लेन दे रखे हैं 100 100 110 and 111. okay, the three planes are given of KCl crystal. Okay, give strong reflection of X-ray beam at angles. Okay, and the three are giving reflection at angles 5 degree 23 inch. Okay, 7 degree 37 inch. Okay, and 9 degree 25 inch. Okay, so he asking what is the crystal structure of KCl. Okay, so whether KCl is SC, FCC or BCC. Okay, so you have angle is given. Okay, Can you repeat the question? Can you repeat? so you have KCl crystals. Okay, and when you incident X-rays of some particular wavelength on these planes, okay, fixed wavelength on these planes, okay, so you get the if you put in these angles. Okay, so you're asking KCl structure is whether SC, FCC or BCC. If you only given this information, can you tell me whether crystal structure is SC, FCC or BCC? तो क्या कैसे करेंगे इसको? एंगल क्या है मतलब? वो एंगल्स Bragg angles. मतलब these are Bragg angles. Okay, you're getting reflection when you are putting Bragg at this Bragg angle on this plane. You're getting reflection. You're getting reflection peak. Okay, that means इस प्लेन की पीक यहाँ पे आ रही है, इस प्लेन की पीक यहाँ पे आ रही है, इस प्लेन की पीक यहाँ पे आ रही है, इस एंगल पे पीक आ रही है. आपको एक एक्सरे मिल रहा है. ठीक है, और ब्रैग एंगल. ओके, तो ये आपका 100 है, 110 है, या 111 है, और एंगल दे रखे हैं आपको इसके लिए. ओके, 523 737 925. okay, experimentally we cannot measure Bragg angle directly, we generally measure 2 theta, but I am just showing here. So these Bragg angles you are getting peaks. तो ये एंगल और पीक रेशियो करेंगे. बस आप रेशियो निकाल लो, ये प्लेन का रेशियो निकाल लो और चेक कर लो, ये आ रहा है कि ये आ रहा है, जो भी आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा. आपको रेशियो निकालना है तो वेवलेंथ वैसे कट जाएगा. ठीक है, किसी को भी एक को रेशियो निकालना तो आप जब रेशियो निकालोगे तो वैसे कट जाएगा वेवलेंथ. लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, ये फार्मूला में यूज करना है ना यहाँ? हां, लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, वही फार्मूला यूज वही फॉर्मूला यूज करना है.
सर ये साइन थीटा का अगर रेशियो करेंगे तब भी तो हो जाएगा। ठीक। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। Okay. So now yesterday I was discussing सर आपने your क्या बोला लास्ट क्या बोला? अभी मैं नहीं अभी कर ही रहा हूँ. Okay. So now we are discussing okay the missing planes. Okay. So yesterday we have left it on half missing planes. हमने खाली FCC तक करा था. Missing planes हमने डायमंड के लिए नहीं किया था. ओके बाकी के लिए नहीं किया था हम लोगों ने. सो FCC हो गया था लेकिन हमने ए फेस फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड नहीं किया था. फेस सेंटर्ड ओके फेस सेंटर्ड के लिए हमने स्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं निकाला था. सो फेस सेंटर मतलब 3 तरह के फेस सेंटर होते हैं ए बी सी. एक तो हमने FCC ऑल फेस सेंटर. ओके नाउ ओनली सिंगल फेस सेंटर. सो इफ यू से सिंगल फेस सेंटर ओके तो यहाँ पे खाली सिंगल फेस पे होगा. So accordingly we can divide in three way. So we have atoms on corner okay and we have atom on planes. A plane okay say this is X, this is your Y, say this is your Z. Okay so XY okay so this so atom can be here okay and so this will be C planes. Okay similarly this will be your A plane and this opposite this will be your B planes. So I can write the coordinates. Okay so एक एटम तो आपका 0 0 पे रहेगा हमेशा ही और एक हो जाएगा आपका 0 हाफ हाफ पे. Okay so this will be your A plane, this will be A, this will be C. Okay देख लेना वो कैसा भी है. तो जो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे A plane के okay this is 0 0 0 okay 0 0 0 it will be 0 half 0 half एंड सी प्लेन के होंगे आपके पास 0 0 0 हाफ हाफ 0. खाली फेस सेंटर्ड है तो इफेक्टिव नंबर आइटम ओनली 2 ही है. ओके सो हमको दो में से एक तो हमको कॉर्नर वाला आइटम लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम 0 0 ले ही रहे हैं हमेशा ही और बाकी हमारा एक फेस पे लेना है. तो किसी एक फेस पे होगा जहाँ पे Z 0 होगा एक जगह पे Y 0 होगा एक जगह पे X 0 होगा और फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट हाफ हाफ होंगे. दिस वे वी आर टेकिंग 3 प्लेन्स. ओके नाउ इनके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है. निकालो कैसे निकालेंगे FHKL. ओके सपोज आई एम कैलकुलेटिंग फॉर A स्ट्रक्चरल फैक्टर FHKL. तो A के लिए क्या आएगा? ओके A के लिए व्हाट इज द फार्मूला? F iota 2 pi hx plus ky plus lz. Okay so you have two coordinates okay for A, these two coordinates. So if I calculate for this one, this will give me, if you put 0 0 0 it will come 1. Okay and if you put half 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 0 half 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 so this will give you e power iota pi k plus l. Okay now everything depends on k plus l. Okay so FHKL will be 2f if k plus l is even. Okay and FHKL will be 0 if k plus l is odd. So in this way you can see intensity. Okay so other planes also you can write. Okay other plane for B plane I can write H plus L should be even. Okay so FHKL for B plane will be 2f if it is even, 0 if H plus L is odd. Similarly I can write for C plane also FHKL will be 2f okay if H plus K is even, it will be 0 if H plus K is odd. Okay now let me calculate for diamond now. Okay diamond and SCP.
इसको इरेज कर दो ना। आई एम इरेजिंग दिस वन। ओके, Yes, sir. कर लोगे तुम लोग यहाँ पे। नाउ डायमंड के लिए करना है। तो डायमंड में कितने आइटम है टोटल? ओके, Sir, 8 items. सो डायमंड किसका स्ट्रक्चर? ओके, डायमंड structure. Okay, here n is 8. Okay, if I take coordinates xj, yj, zj, okay, these coordinates are 0 0 0. Okay, half 0 0, half and half 0 half, and then you have 1 by 4 1 by 4 1 by 4. Okay, then you have 3 by 4 3 by 4 1 by 4. Okay, and you have 1 by 4 3 by 4 3 by 4, and then you have a 3 by 4 1 by 4 and 3 by 4. So these are the coordinates. Okay, now if you want to write that FHKL, okay, so one way is you put all these things, okay, coordinates, and you find the conditions. Okay, that also easy. Okay, but I'm not doing this way. So what I'm doing, I'm assuming that my diamond is FCC crystal with 2 atom basis. Okay, so the 2 atoms basis, so I'm taking the coordinates. One is, I told you, one is corner atom. Okay, and one atom I'm taking at one by this which is coming on 11444. Okay, so if I write the FHKL सर बेसिस कंसीडर करें मतलब 2 एटम्स को हम कंबाइन कंसीडर कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं? नहीं, हम FCC कर रहे हैं अभी। ओके, इसको मैं इस ब्रेक करके कर रहा हूँ। ओके, सो FHKL पहले मैं बेसिस के लिए निकाल रहा हूँ। अगर मैं बेसिस ले रहा हूँ 2 एटम्स का, then it will be your 1 2. Okay, e power 2 iota pi hx plus ky plus lz. Okay, and I'm taking coordinates 0 0 0 and 1 by 4 1 by 4 1 by 4. So if I'm taking this one FHKL for basis, okay, this will give me f 0 0 के लिए 1 आ जाएगा, and then I'll get, if I put 1 by 4 1 by 1 by 4, okay, so this will become pi by 2. It's not half में तो पाई बन जाता है, पाई बाय 2 बन जाएगा। पाई बाय 2 पे क्या बनेगा? हमको आयोटा मिलेगा, आयोटा। ओके, सो इट विल बी माइनस आयोटा। ओके, डिपेंडिंग ऑन h प्लस के एल, वो ऑड है कि इवन है, हमको आयोटा मिलेगा कि माइनस आयोटा मिलेगा, डिपेंड करता है इसमें। ओके, तो दिस सो फॉर दिस basis I can write this equation. Okay, now if I want to write सर ये बेसिस पर 0 0 और 1 by 4 1 by 4 1 by 4 क्यों है? हाँ, तो इसी को ये मिनिमम, ये जो फ्रैक्शनल एटम है, ओके, इन्हीं को कंबाइन करके बेसिस बनता है। जैसे हमने 0 0 कैसे लेते हैं हम लोग? एटम तो कोने में सब जगह है, तो हम 0 0 क्यों लेते हैं? तो जो क्लोजेस्ट है, ओके, जो सेंटर मान के एक एटम ये वाला, और जो एक्स्ट्रा एटम जो हम लोग डाल रहे थे कार्बन एटम वाला, वो वाला, उनको कंबाइन करके हम लोग एटम ले रहे हैं 1 by 4 4 4। ओके, भी जो 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 रेफरेंस है उससे तो ये 1 by 4 डिस्टेंस में ही है ना। ओके, अगर रेफरेंस हम बदल देंगे तो फिर वो 3 by 4 हो जाता है, जैसे ऊपर है, पर अगर हम रेफरेंस यही पास में ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट 1 by 4 ही आता है। ओके, उसके क्लोजेस्ट एटम को अगर हम 0 0 मान लेंगे तो आपका जो उसके कोऑर्डिनेट जो नेक्स्ट के बगल वाला जो है एक्स्ट्रा जो एटम जो आ रहा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, दैट विल बी 1 by 4 1 by 4 1 by 4। ओके, नाउ मुझे लिखना है FHKL for diamond. So FHKL for diamond I can write, okay, for FCC I have seen, for FCC this is equal to h plus k minus 1 k plus l plus minus h plus l. This was for FCC.
Now just multiply this by this one. Okay, so you just multiply. Okay, so you'll get what, 1 plus minus iota, okay, h प्लस k प्लस l। इसे करने से आसान हो जाएगा। वैसे क्या 8 कोऑर्डिनेट आप डालोगे, आएगा यही, मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम टर्म आएगी। तो इससे क्या एनालिसिस करना आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे और कोऑर्डिनेट रखोगे तो फाइनली सेम टर्म ही आएगा। सो नाउ दिस सर एक्सप्रेशन इज इजी टू एनालाइज। हाँ बोलो। 1 प्लस क्या है वो, -1 है या माइनस आयोटा है, ये अंदर -1 है, ये माइनस आयोटा है, क्योंकि यहाँ पे π/2 आएगा ना। ओके, सो दिस इज माय एक्सप्रेशन। अब इस पे एक चीज तो सीधी सीधी क्लियर है, इफ HKL आर ऑफ मिक्स्ड पैरिटी, इफ HKL आर ऑफ मिक्स्ड पैरिटी, 0 ओके, होगा। तो ये तो FCC 0 हो ही जाएगा, तो आपका FSC 0 हो जाएगा डायमंड में भी। ओके, तो मैं इंटेंसिटी लिखूंगा, इफ आई राइट इंटेंसिटी, ओके, सो इंटेंसिटी विल बी योर 0, FHKL विल बी 0, क्योंकि आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो मिक्स तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ हो सकते हैं ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस से इट इज ऑड। ये क्या हो गया, give me 1 minute, I think some issue is there. Okay, now let us say, हाँ Video is blur. ब्लर है, अच्छा, just give me 1 minute. Is it okay now? No, No, sir. sir. अभी तो ठीक हो जाना चाहिए। अभी ठीक है? No, sir. वैसा करना चाहिए। अभी ब्लड है? ब्लड है। Yes, एक sir. एक मिनट, तो वापस करना पड़ेगा इसको। अभी कैसा है? सर तो ब्लर blur ही है काफी। तो अब क्लियर हो गया। अब ठीक है सर। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ इफ HKL is odd, okay, then what I can write? Okay, if HKL is odd, HKL is odd, तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका 4 हो जाएगा, this will become 4, okay? नहीं ऑड होगा तो क्या होगा? So if HKL is odd, this all become even, तो 4 हो जाएगा। Okay, so you'll get your FHKL equal to 4, okay, and F जो आएगा वो F तो रहेगा, okay, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 पे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, अगर ऑड है, अगर सपोज ऑड है मतलब आपका सपोज 1 है, 1 आएगा तो माइनस आइटा आ जाएगा। ओके,
if it's odd, so odd will give you odd. Okay, now if it is 2, और odd मिलके 2 बन सकता है क्या? तो 2 नहीं बन सकता ना odd मिलके। 3 बन सकता है क्या? 3 1 1 1 3 आएगा तब क्या आएगा? 3 आएगा। तो कुल मिला के इसको पुट कर देखना, this will come 1 plus minus iota. If HCl values are odd, okay, either it will come plus iota, either it will come minus iota. So your FHCl will come this one, okay. And so if you calculate the intensity, okay, FHCl square, that will come 16. 4 magnitude कैसे निकालेंगे? 4 4, okay. So this will come your 32 F square. 32 F square. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका? 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो क्या अंडर 32, ओके, एंड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 32 एफ स्क्वायर. सो इफ एचकेएल इज ऑड, मिक्स है तो 0 जाएगा, ऑड में आपका ये आ जाएगा. अब इवन है, ओके, सो इवन में भी क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ओके. इफ इट इज ओनली दिस वन, if this is only even, तो even में तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 0 हो जाएगा. जैसे दो रख दिया तो 2 माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर -1 0 हो जाएगा. 4 रखोगे, ओके, तो उसमें भी शायद माइनस 4 रखोगे तो क्या आएगा? 4 रकम 0 नहीं आएगा. 4 रकम 0 नहीं आएगा, ओके. सो इट सेज, ओके, इफ HCl is even, okay, all are even, okay, all HCl all are even, and H plus K plus L is divisible by 4, okay. Then your intensity will be again, okay, your IF HCl ka square, that will come your 64 F square, okay. Otherwise it will be 0. So you can take any number. Suppose you take 6, यहाँ पे 6 लेके देखो, so then it will come, then this term will become 0. जब 6 लिया तो ये प्लस हो जाएगा, आयटा क्या हो जाएगा? आयटा इंटू 6 टाइम्स ना, तो आयटा स्क्वायर -1, तो -1, ओके, तो माइनस आएगा तो 0 हो जाएगा. तो अगर 8 लोग हैं तो अगेन क्या? -1 +1 हो जाएगा, ओके. तो अगर आप आपका HCl is divisible by 4, then you will frequency, otherwise you won't get any intensity. तो इसका मतलब डायमंड क्रिस्टल में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपके कोई भी जो डायमंड क्रिस्टल का जब भी एक्साइड देखोगे तो उसमें आपको HCl मिक्स तो मिलेगा ही नहीं, ओके. तो या तो ऑड मिलेगा, ऑड पीक्स मिलेंगी, और इवन पीक में भी वही पीक मिलेगी जो 4 से डिविजिबल है. जैसे 1 1 2 मिल जाएगा आपको. इवन में कैसे मिलेगा? इवन में 0 0 0 2 2 मिल जाएगा, 0 2 2 मिल जाएगा, तो दैट इज डिविजिबल ऑफ 4. 0, okay, so 0 4 4 divisible by 4. तो इस तरह 0 2 6 you can get this way, or otherwise all should be odd. Even में that should be divisible by 4. This is the condition for your diamond crystal, okay. Excuse me sir. हाँ बोलिए सर, हमने ये बेसिस वाली टर्म मल्टीप्लाई क्यों करी? या तो आपको मैंने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, आपको जो मैंने 8 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, आप वो 8 कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करो, ओके. but then it will be difficult to analyze very easily, okay. So if you solve in this way, okay, that if आप इनको मल्टीप्लाई कर देखो ना, जो मैंने दो टर्म्स लिखी है मल्टीप्लाई कर देखो, आपकी सेम टर्म आएगी जो आप कोऑर्डिनेट्स लिख के डालोगे, सेम टर्म्स आएगी. पर इसको सिंपलीफाई समझाने के लिए FCC is considered, okay, your diamond FCC crystal is considered, okay, a FCC crystal with basis of 2 atoms, okay. अब 2 atom कौन से लेंगे हम लोग? एक तो 0 0 कॉर्नर वाला लेंगे, और एक क्या है उसके जो बगल में 1 1 4 4 4 है, क्योंकि इन जनरल FCC इन FCC you have only 4 atoms, okay. In diamond crystal instead of 4 you have 8 atoms in unit cell. So you can consider your diamond is FCC lattice with 2 atom per basis. Is it clear? हम ये और क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते थे. और क्वेश्चंस के लिए जनरली आपके जो FCC होता है
उस विद 2 एटम बेसिस उसको सॉल्व सीधा सॉल्व करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल बेसिस सॉल्व करते हैं, इसी तरह से करते हैं। ओके ओके सर। फिर गया। Okay, so I'm stopping here. एक और बचा हुआ है. Okay, that will do tomorrow. Okay, hexagonal closed SCP. Okay, that will discuss tomorrow. Okay. So I'm stopping here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.